Good morning. Hi, Randeep. Good morning, Ca- Randeep. Hi, my name is Monty. I'm from New York. Monty. Am I audible to you guys? Yeah, yeah, of course. Excellent. You give a very beautiful reference point of Oppenheimer. First of all, congratulations to all you four wonderful gentlemen on the podium. This is a huge project because this project might go down in history. As Sandeep rightly said, he had a lot of rebuttals since 2018, and people are not ready to listen to this wonderful story, which is non-fiction, factual, a biopic. So kudos to you. A great round of applause, ladies and gentlemen, for this wonderful, wonderful four guys Thank on you so stage much. who've gone against the storm, gone against the tide, with support. Now, Randeep, coming back to the reference point, Oppenheimer also had a lot of obstacles when being made in the United States. Most importantly, the duration. A lot of people don't know that this film is 2 hours and 56 minutes. When you sit down and when you wrote the script of this film, how everybody wants the film to be a commercial success or a critical success. In your case, you want it to be both. What have you done on the script wise that you've kept the audience engagement to make sure that the audience stays and watches the entire film for 2 hours and 56 Well, minutes? uh, it was all in the screenplay. We wrote the screenplay, me and Utkarsh Nethani, we wrote the screenplay in a way so that it keeps people engaged from one step to the other and people discover things as they go on. And also, from the commercial angle of it, I made sure that it was a very user-friendly film. It was not a preaching on Veer Savarkar's life. Rather, it was a discovery of his life as we go along, as he discovers it. In the case of Oppenheimer, they have one case that's going on with him and they keep cutting back to his life. I have gone the hard way. I've told a linear story from 1897 to 1950, keeping in mind the reality, the dates and everything, but making it, writing it and making it in a way which is dramatic, engaging and enthralling. It's at times this moves like a thriller. Hi, Randeep. Jaya here from Bollywood now. This side, straight. Aye. अभी आपने बोला कि बॉक्स ऑफिस प्रोड्यूसर का रोल आपके लिए लीस्ट फेवरेट रहा है. आई वुड लाइक टू नो कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपके लिए अफेक्ट करता है या इट वरीज यू. Everybody is bothered about box office numbers, man. Of course, box office numbers for me are a clear indication that my work has reached out to that many people. Oftentimes, the work that one does reaches out to people through OTT and satellite, but box office number gives you a guarantee that that many people saw it collectively in a hall, how movies are supposed to be seen. So it is very important. Every artist wants their work to reach out to as many people as possible. Hi. हेलो Hi. हेलो Hello. या नहीं नहीं पहले भारती जी. माइक लीजिए आप. आपकी आवाज गूंजनी चाहिए. Talk to me about the transformation, physical transformation for the character, because it was very tough. I know the whole story, but can you just relate? Yeah. You know everything, Bharti ji. आपसे कुछ नहीं छुपा है. तो physical see, I do that in every role. It is more pronounced in movies like Sarabjit and Do Lafzon Ki Kahani, because that's an extreme physical transformation. But even in a series like Inspector Vinash or Cat, for that example, I did go. But transformation for me is more of a thought process, and how does that particular character sees the world. And physical transformation is probably the most basic part of it. I believe that you got to look the character for making people believe it. It is tough. It is tough. My mother often leaves the home and goes back to Haryana. I can't watch you, not eat anything. In this case, I lost about 32 kilos. So it was more than Sarabjit. But I felt that if a person is locked up in Kalapani for so long with meager food and very bad conditions, there was an extreme weight loss. And Savarkar ji had jaundice many, many times while he was there, and he was skeletal. And in fact, in the end, they finally let him out through Mr. Gandhi's intervention. My health condition has suffered a lot, but I've got my sister, Anjali Hooda, who's
been very, very careful with my transformations, and she has warned me now not to do it again, but I probably will. Randeep. Hello, Hi. hello. Hi, Randeep, Randeep. sir. Here pe, everyone. Hi, this is Simran Singh here. First of all, congratulations, Paji, for the Hi, trailer. ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? बस वधिया, तुसी ठीक हो? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? Okay, so my question to you is कि see, आज के दौर में since we have the best of VFX, we can do anything. मतलब हम आज बली नकली मूछे लगा के 30 दिन के अंदर शूट करके हम कर लेते हैं. But हाँ, but there are projects of yours when you have gone a severe physical transformation. मतलब भी सरबजीत Battle of Saragari भी थी. That was also you dedicated years to that project, and now Savarkar. How do you look upon to the fact when a film has been approached, मतलब आपको film आती है, आप उसको as an art आप उसको पूरा फॉलो करते हैं and you give years to that. You're not into that कि हाँ चलो VFX हम कर लेते हैं, क्या पता चल जाएगा. What are your thought process? Because कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है that you don't want to cheat your audience, your fans. I think I don't want to cheat myself, mostly. Because, getting those, I say no to every project when it comes to me, verbatim. Like, I don't want to do it. Because I can already see how many months and years it's going to go into it. So I'm very reluctant. But once I've chosen it, then it is for me to experience as a human being, putting myself in another human being's shoes. And that cannot happen overnight. I do end up making less money than others, but I hope my work lasts longer, and I could be an example of some kind for people to come. And to love your work is to really love God, I think. I think that's what it is. That's what I do, and I'm proud of it, though my parents are always worried about it. But I hope they'll see the bigger picture. Hello, yes sir. Hi, Randeep Randeep here, sir. Randeep here. Hi. Oh yeah. On your left. Joji. Aha, bro. First of all, hats off to the trailer and yourself. Thank you. The question is a little tricky for you. Like, I just Why are you want to asking know, it, yeah? Yeah, I'm because want to know, like, because should I call you a greedy person for this movie? Because it has to be the zing in you, because to select such a role, because you are the producer, you're the director, you're the actor. So why did you choose all? Because there was something in you for Savarkar, or it just came or you did it? I think all these things came by steps, not at one time. And I think it might be Veer Savarkar's wish that I become all-encompassing entity on this thing. But it is wrong to believe that I did it all alone. There were my producing partners. There was a beautiful crew that worked very hard, and wonderful actors who put in a lot. And because I used to be starving, so I used to be very chidchida, as they say, right? So there's a word for it that has been invented called hangry. So I think they bore a lot of that brunt. But yeah, I think somewhere I do believe that I was chosen for it. And all I kept doing at every stage, at every new stage, was that I have to give it my best, because I owe it to Veer Savarkar, to his spirit, to his legacy, and to his untold story, that I tell it well so that it reaches people and people absorb it and feel what he went through and all the sacrifices that he made, which have been brushed under the carpet. Hi Randeep sir. This question Hi. is for Samir here Sandeep. from Movie Talkies. Sir, ट्रेलर के आखिर में एक सीन है when you speak about Congress leaders not getting the Kala Pani penalty. So will we see this Savarkar versus Congress debates more in the film, and it might spark some controversy? It is about the armed revolution. The movie is about the armed revolution, and Congress most of the time, except for Lokmanya Tilak, was a pacifist organization, and that is true. No Congress person was ever sentenced to Kalapani. Why would that be? I think it's a question that I'm asking the audience, and I think it's a question for you as well. You should do some reading up and see what it is. It is not Savarkar ji versus anybody else. It is his story, and of course, the larger story is the story of the armed revolution, in which he was a very big influencer. He was an ideologue. He converted the 1857 mutiny, which even I was taught in school as 1857 Sepoy Mutiny,
into the first war of Indian independence. And that that turn of point of view gave a lot of inspiration to all the freedom fighters that came after him, and mostly that took up arms to destroy the British out of India rather than begging them to leave. My question is for Sandeep. Sandeep, first of all, congratulations on your previous accolades, Atal, and the great story on our honorable Prime Minister. Very few people, very few people know that you are a fighter. Could you tell us about the difficulties of bringing this movie to, to the foray as you've done it? You said you started off in 2018. What were the challenges that you faced, and what is something that you would like to share with us? You said that people said, "Ye film mat bana, kyun nahi bana?" What were the rebuttals that you were getting back from wherever you're going for help, and how did Anand sir came into the picture, and what inspired you from the life of Vinayak Damodar Savarkar sir that you can relate to yourself? आप क्या उनमें ऐसा देखा उन्होंने जो this is your baby actually? So if you can take us through that little journey and share about your challenges. Firstly, this is not my baby. This is our baby. Everybody's, whoever, like even yours, because अरबों में से आप यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के ज़रिए ये सिनेमा वहाँ पहुँचेगी. तो पहले तो थैंक यू. देखिए, डिफ़िकल्टीज़ हर चीज़ में होती है, हर जगह पर होती है, हर घर में होती है. तो ये तो सिनेमा है और ये हमारा काम है. और हर फिल्म ऐसी फिल्मों को बनाना, क्योंकि रोमांटिक या सीक्वल्स बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो फिल्में कम प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. और जैसे कि रणदीप ने कहा कि उनको कई फिल्मों में कम पैसे मिलते हैं, लेकिन रोल इतना अच्छा होता है कि वो करते हैं ताकि आगे के जनरेशन, अभी वो नहीं देख रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं कि उनको याद किया जाए. उसी तरीके से जब मैं भी किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक्चुअली में वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, क्योंकि बाहर से इतने लोग सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं और उनका वो सब्जेक्ट्स नहीं सपना बन जाता है. और उसी तरीके से ये जो फिल्में मैं इतने सालों से बनाता आया हूँ, चाहे वो सरबजीत हो, अलीगढ़ हो, भूमि हो, मैरी कॉम हो, झुंड हो, अटल हो, सावरकर, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि बाजीराव वॉज माई टफेस्ट फिल्म टू सेट अप एंड शूट एंड रिलीज़. But I would say Savarkar is the toughest film to convince people to do the film. क्योंकि 3 साल तक तो मुझे कोई फंडर मिला ही नहीं, और मैं लास्ट में ही हमेशा आनंद पंडित जी के पास जाता हूँ जब सारे जगह से हार जाता हूँ. और आनंद जी के पास मेरी मीटिंग वो मेरे हिसाब से 5 मिनट की होती है कि सर मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमें सपोर्ट कर दें. ठीक है संदीप, डन, नो प्रॉब्लम. तो कौन, मतलब इतना आसान होता है वो चीज़. तो आनंद जी, यू हैव बीन अ ग्रेट पिलर इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच रियली. एंड देन फिर उस फिल्म में वो कोई भी फिल्म तभी बन पाती है जब एक वो पर्टिकुलर एक्टर हो. और जब रणदीप मुझे मिल गया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत, मतलब मैं 100 से सीधा 90% रिलैक्स हो गया फिल्म पे, क्योंकि ही टुक द चार्ज ऑफ, एंड स्लोली ही केम एज एन एक्टर. देन ही started helping in writing, and then he wrote the film, then dialogues, and then what all he has gone through, that is his journey, which he will definitely tell in the process before the 22nd March, hopefully, Randeep, and we should say Many this. times over. I'll be telling it many times. And तो ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे लगता है कि भारत को बहुत ज़रूरत है, कि सिनेमा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को. और ये बात मैं खुद सिनेमा जैसे जब मैंने लगान देखा तो मुझे लगा कि यार फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग लास्ट के 6 पे खड़े हो गए थे गेटी थिएटर के स्टॉल पे. तो मुझे लगा ये असर होता है सिनेमा का, और अंदर ही था. पर मैं कोई जौहर या फिर खान तो हूँ नहीं कि सिनेमा में ईजिली आ जाऊँ. तो मैंने पहले जर्नलिज्म किया 10 साल, सीखा, समझा, लोगों को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर कमिंग इनटू सिनेमा. और उसके बाद जब ये समझ में आ गया, तब मैंने फिल्में बनाना, फिर संजय भंसाली जी ने मुझे CEO रखा और फिर मैं वो जर्नी शुरू किया. लेकिन मेरे हिसाब से फिल्में बहुत आसान हैं, लोग बहुत मुश्किल हैं. तो एक फिल्म पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सही टीम चुनना, और वो टीम जब सही मिलती जाती है तो फिल्म पहुंच जाती है अपने मुकाम पे. थैंक यू. Randeep. Anand sir, what did you like about this particular project when Sandeep came and met you? What was
that something that he gave you, and he must have given you a narration. What was something which you said, "Nahi yaar, I have to do this film"? See, being part of Bharatiya Janata Party, I was a treasurer of Bharatiya Janata Party. So always मैंने सावरकर जी को स्टडी किया था. So I always thought कि उनको न्याय नहीं मिला था कभी भी. And when Randeep and Sandeep came, and Randeep का जो conviction देखा था हमने 5 मिनट में, मैंने बोला ठीक है, I'm on. So उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था. I think next generation को ये एक कहानी like a library छोड़ के जाए. So that was the intention. Hello, Hello. Randeep here. Randeep over here. Oh yeah. More questions. Yes, one question. See, we have सुना है, देखा है, मतलब सुना देखा ही नहीं, सुना है कि जो काला पानी और द ट्रॉमा व्हाट ही वेंट थ्रू सावरकर, जब आप रियली में उनकी जब किरदार अदा कर रहे थे, तो कहीं आपको ऐसा रुक गए, कहीं आपको ऐसा टूट गए कि ऐसा जब एक्चुअली उनका क्या हुआ होगा? नहीं, मैं जब रेकी पे भी गया था तो मैंने अपने आप को उनकी सेल में बंद करने को बोला क्रू को, और बोला आप तुम जाओ, थोड़ी देर में बुलाता हूँ. मुझसे ज़्यादा देर रहा नहीं गया वहाँ पे, मेरा दम घुटने लगा. पर मैं उनको एक तरफ से क्या क्या गुजरा वो तो ऑब्वियसली इमेजिन करते हो आप एज एन एक्टर, पर मुझे हमेशा एज ए डायरेक्टर अपने आप को उसके ऊपर रखना पड़ा, क्योंकि पूरा तामझाम ही मैं देख रहा था. तो it was tough, but it was unimaginably tough what he went through, and not only him, many other people. And there are other unsung people like his own older brother Baba Rao Savarkar or Ganesh Damodar Savarkar, who also went to Kalapani, who also went through all the struggle, and he's even more unsung than Vinayak Damodar Savarkar. So there are many more people who suffered a lot, but nobody was a prolific writer, poet, and an ideologue like Mr. Vinayak Savarkar was. What differentiates him from other people was not only his struggle, but also his giant intellect and his ability to convince and influence a large amount of people. That's why he's so important today. We're going to take one last question. Last question, please. रणदीप सेंटर में रणदीप आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जो है लोग जो है फिल्मों को जो है मतलब नेटिजन जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं कुछ ना कुछ लेके, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेके करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है, या फिर उसके बाद जो है पार्टी से जोड़ देंगे पॉलिटिकल उससे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो सावरकर जी की लाइफ में बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है. तो ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये उस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है. और ये फिल्म हम एक्चुअली पिछले 15 अगस्त को रिलीज़ करने वाले थे, पर ड्यू टू मैनी रीजंस आउट ऑफ आवर कंट्रोल ये रिलीज़ होते होते 22 मार्च तक आई है. और मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें. जितना लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे, उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुँचेगी. ये मेरा अपना मानना है. Hi guys, Naveen this side from E24. First of all, congratulations to you all. Thank you. बचपन में मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि भारत की पहली महिला जिन्होंने झंडा को फहराया था वो था मैडम कामा, और उसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही ट्रीट था. मेरा सवाल संदीप आपसे भी है और आनंद सर आपसे है कि 2 लैंग्वेजेस में क्यों नहीं भारत के हर कोने में ये कहानी पहुंचनी चाहिए? क्या कोई प्लानिंग है कि आगे अदर लैंग्वेजेस में भी आप इसे रिलीज़ करेंगे? नहीं, ऐसा आप सिनेमा को लैंग्वेज में क्यों बांध रहे हैं? हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और हिंदी ही होनी चाहिए. और क्योंकि एक मराठी में भी वो भगूर में रहते थे देवलाली में, तो जी ने, डायरेक्टर साहब ने और हम सब ने सोचा कि इसको मराठी में भी बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने मराठी में भी उसको पेश कर रहे हैं हम. तो आप शायद उसको बांध रहे हैं कि हिंदी में ही क्यों. हिंदी ही मलयालम है, हिंदी ही कन्नड़ है, हिंदी ही तमिल है. हमने उसको बांटा है. भाषा एक ही है भारत का. I'll add to that. सावरकर जी उनकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि जो
उनको नहीं रही, वो थी कि वो मराठी में बहुत ज़्यादातर उनके लेख मराठी में हैं, उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे। इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए। जब मैंने भी इनको पढ़ने की कोशिश की तो मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे, तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में चूज़ किया और मराठी इसीलिए क्योंकि वो मराठी थे और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के गांव-गांव तक ये पिक्चर पहुँचे। और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी, पूरी नहीं देखी, जितनी देखी, मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी। और बाकी लैंग्वेजेस का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है नहीं करना। मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुंचनी चाहिए, बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ colonialism that we went through, which were somewhere missing in Richard Attenborough's take on Gandhi. The hard work that has gone into it, the blood and sweat that has gone into it, is reflecting. It's all over there. Thank you, gentlemen, for. Thank you very much. One last question. It's on. You can Hello. shoot. हेलो रणदीप सर, यहाँ पे हाँ जी बताइए, शिंदे फ्रॉम मुंबई तरुण भारत। आपका माइक ऊपर कर लीजिए। आई डोंट नो, इट्स नॉट। हेलो, ओके। हेलो रणदीप सर, रसिका शिंदे फ्रॉम मुंबई तरुण भारत। अभी आपने कहा कि मराठी में आपने ये मूवी देखा और भी ज़्यादा सुंदर लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे ये पूछना है कि जब भी आप कोई बायोपिक करते हैं तो उनके कैरेक्टर में से कुछ चीज़ें एज अ एक्टर, एज अ इंसान आप अपने पास रखते हो। सावरकर जी के गुण या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली थी। आपने ऐसे कौन से 3 गुण हैं जो आपके पास एक रणदीप हुडा हमेशा रखना चाहेगा और जो उन्होंने रखा है? उनकी लिखाई, उनकी लिखने की जो एक रुचि थी। मैंने भी ये पिक्चर करते करते मैं भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखने लगा हूँ। ये पिक्चर तो खैर लिखी थी। दूसरा उनका देश प्रेम और उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत, धर्म, समाज या जाति के क्यों ना हो। वो मैं पहले भी बिलीव करता था और उनसे उनके लेख पढ़ के और उनके बारे में जान के ये मेरे लिए और भी माननीय हो गया है। और उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ जैसे तिखट, ये सब तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं।